Hello students, welcome you all again, and today we are going to discuss the second session की 24th January memory based paper, second shift की paper. The first question given in this, what are the hybridization and magnetic moment in BM of CONH3 6 times 3 plus. अब ये कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं CO is in +3 state, it is 3d6 4s0 configuration. Now in presence of strong field ligand, the octahedral complex, it is splitting the d orbitals as T2g and EZ set. In the T2g, in presence of strong field, the lower energy set of d orbitals are completely filled. So in this there will be no unpaired electrons. That means configuration you will write 2Tg, T2g, 2, 2, EZ, 0, 0. Now there is no unpaired electrons. So since there is no unpaired electrons, it is diamagnetic. So if it is diamagnetic, magnetic moment is 0 BM. And here the EG set of orbitals are available. That means it will undergo D2sp3 hybridization. So D2sp3 hybridization, magnetic moment 0 BM. Next, this is from surface chemistry. How many of the following statements are correct? Physisorption are decreasing with increase in temperature. So the extent of physisorption decreases with the temperature. It decreases with the temperature. So this statement is correct. And in physisorption, enthalpy of adsorption is very high. No, the enthalpy of adsorption is low only. That means it is 20 to 40 kilojoule per mole. Next, the physisorption is unimolecular layered. ये भी गलत है क्योंकि ये मल्टीमॉलिक्यूलर फिनोमिनन है. So ये gas molecules will adsorb over the adsorbent because there will be van der Waals forces of attraction. So it is a multi-molecular phenomenon. And in physisorption, activation energy is not required. Yes, there is no requirement of activation energy for the adsorption of gas molecules. Next, in physisorption is not depend on nature of adsorbate. ये भी सही है क्योंकि ये बस adsorption होना है. So adsorption phenomenon में यहाँ केवल van der Waals forces of attraction है. There is no chemical bonding or forming. In chemisorption, it depends on the nature of adsorbate. But in physisorption, on any adsorbent, the adsorbate can adsorb. So the whatever may be the gas that can adsorb over the adsorbent. So it doesn't depend on nature of adsorbate. So these three statements are correct. Next, which of the following gas turns acidified potassium dichromate solution in green color solution? That is, the given gases are sulfur dioxide, carbon dioxide, SO3 and O3. Here this carbon dioxide will not react, SO3 will not react and O3 will not react with potassium dichromate. Only SO2 will react with acidified potassium dichromate and gives chromic sulfate, which is in green colored solution. This is from Block elements. Which of these act as oxidizing agents? Here samarium 2+, cerium 4+, and terbium 4+, and terbium 2+. These are given. Here in these, the ions in which higher oxidation state, that is cerium 4+ and terbium 4+, these can act as a very good oxidizing agents. So the ions which are in higher oxidation state can act as good oxidizing agents. So that is cerium 4+ and terbium 4+ can act as good oxidizing agents.
Next one, how many of the following describes the concentration of a solution? That is mole, it is representing the quantity, not the concentration. Now mole fraction, it is also a concentration method, and molarity concentration method, molality concentration method, and weight by weight percentage, it is also a concentration method, and ppm parts per million, it is also a concentration method. That means these are describing the concentration of a solution. A unipositively charged ion have 55 protons. Then how many s electrons are present in that ion? 55 protons means it is cesium, and in the cesium, if you observe the configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6. इसमें number of s electrons you can check 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2. So total number of s electrons are 10. Calculate total number of pi bonds in peroxide disulfuric acid and pyrosulfuric acid. Peroxide disulfuric acid is H2S2O8. अब इसमें number of pi bonds are 4, and pyrosulfuric acid is H2S2O7. इसमें भी number of pi bonds are 4. So total number of pi bonds are 8. So answer 8. The number of unpaired electrons present in highest energy occupied molecular orbital in the following species respectively are N2, N2 plus, O2, O2 plus ions are given. इसमें highest energy occupied molecular orbitals, that means homomolecular orbitals में number of unpaired electrons बताना है. So if you write the configuration for these species N2, N2 plus, O2 and O2 plus, the highest occupied molecular orbitals में इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. इसमें सिग्मा 2pz, these are paired, that means no unpaired electrons, 0. इसमें सिग्मा 2pz1, 1 unpaired electron, and pi 2px1, pi star 2px1, pi star 2py1. In this O2 molecule there is 2 unpaired electrons, and in O2 plus there is 1 unpaired electron. Identify the correct conductometric titration curve for benzoic acid and NaOH titration. Benzoic acid is weak acid, NaOH is strong base. In this weak acid strong base titration, if you observe the conductance, initially the conductance by the addition of NaOH, initially it will have lower conductance, but it will goes on increasing because of the dissociation of the sodium benzoate. The ions are obtaining, so the ions formation increases the conductance, and this is increasing up to equivalence point, and after the equivalence point this conductance will sharply increase, because in this conductance is sharply increasing, because after the equivalence point if you add further NaOH, due to the presence of OH minus ion which is having high conductance, the conductance is sharply increasing. And शुरुआत में क्या होगा, इसमें कंडक्टेंस थोड़ा सा डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज हो जाएगी. क्यों थोड़ा सा डिक्रीज होगा, ये नेग्लिजिबल है. क्यों डिक्रीज होगा, इसका रीजन है इसमें बेंजोइक एसिड में ये C6H5COOH में these H plus ions are replaced by NaOH में Na plus ion से replace हो जाएगी. So ये H plus ions replace होके ये सोडियम बेंजोएट बन रहा है. अब इसमें C6H5COOH में हाई कंडक्टेंस किसका है, H प्लस आयंस का है. तो ये H प्लस आयंस जब आप शुरुआत में NaOH ऐड करने से पहले आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें H प्लस आयंस की वजह से कंडक्टेंस तो कुछ है. अब इसमें ये कंडक्टेंस क्या होगा,
ये कंडक्टेंस फिर डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? नेग्लिजिबल है फिर भी वो क्यों डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयंस बाय Na प्लस आयंस। सो कंडक्टेंस थोड़ा डिक्रीज होगा। फिर उसके बाद फिर इंक्रीज होता जाएगा। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन C6H5 COO माइनस कॉमन आयन, इसमें डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड डिक्रीज तो होगा, सो H प्लस आयंस अवेलेबिलिटी कम हो रहा है, बट dissociation of salt is responsible to increase this conductance, and this increase will continue up to equivalence point, and after the equivalence point क्या होगा? फिर केवल C6H5COOH बेंजोइक एसिड खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप NaOH ऐड करेंगे तो ये NaOH की वजह से ये कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। Next, in metallurgical extraction of metal, first oxidation, then reduction process is followed, then the metal is, इसमें यहाँ सिल्वर और गोल्ड मेटल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, और इसमें ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर से ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा when it undergoes oxidation, and फिर this will reduced by zinc and it is converted again into 0 oxidation state. So this is the leaching process, this is extraction of gold and silver, and in this process you can observe silver or gold metal first oxidized, and after that in presence of zinc it is reducing. The pH of 0.005 molar calcium lactate is X into 10 power minus 10. Then value of X is, इसमें आपको pK वैल्यू ऑफ लैक्टिक एसिड भी दे रखा है। तो ये कैल्शियम लैक्टेट, लैक्टिक एसिड इज वीक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लैक्टिक एसिड से बन गया ये साल्ट। अब इसमें ये लैक्टेट आयन ये हाइड्रोलिसिस होगा बिकॉज इट इज द स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, और ये कॉन्सेंट्रेशन आप ऑब्जर्व करेंगे तो लैक्टेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 10 पावर माइनस 2, बिकॉज इस कैल्शियम लैक्टेट की कॉन्सेंट्रेशन है 5 into 10 पावर माइनस 3। अब इसमें लैक्टेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 10 पावर माइनस 2 मोलर होगा। अब pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, pH ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ये pH कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। इसमें pK वैल्यू इज 5 और log C वैल्यू हम पुट करेंगे तो यू विल गेट 8.5, and this can be written as 85 into 10 power minus 1. So X value will be 85 for this. Next, in which of the following reaction hydrogen peroxide acts as reducing agent? So इसमें ऑब्जर्व कर लो, reducing agent means इसमें दूसरे को Fe2 प्लस Fe2 प्लस 2 Fe3 प्लस ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, Mn2 प्लस 2 Mn4 प्लस ये भी ऑक्सीडाइज हो गया। इसमें +1 to -1 ये रिड्यूस हो गया। यहाँ PbS सल्फाइड Pb-2 से ये +6 ये भी ऑक्सीडाइज हो गया। सो इसमें रिडक्शन केवल Cl+1 से -1 इसी रिएक्शन में हुआ है, तो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट जैसा एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। अब इसमें ये फर्स्ट वन इज आइसोबारिक प्रोसेस है, एंड 2 to 3 इज आइसोकोरिक प्रोसेस है, एंड 3 to 1 इज आइसोथर्मल प्रोसेस है। तब इसमें कैलकुलेट वर्क डन, mod of work done in cyclic process in ATM liter। अब इसमें 1 to 2 आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन इक्वल टू -P डेल्टा V। इसमें एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm एंड डेल्टा V वैल्यू 40 - 20 इट इज -40,
लीटर एटीएम होगा। एंड 223 इज आइसोकोरिक प्रोसेस, सो डेल्टा वी 0 हो जाएगी, तो वर्क डन विल बी 0। एंड 321 आइसोकोरिक प्रोसेस, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस में माइनस एनआरटी एलएन V2/V1। अब इसमें 2.303 इंटू 1 इंटू ये 40 इंटू टेम्परेचर, हम एनआरटी के जगह पीवी लिख रहे हैं तो log 20/40। अब इसको हम ये इन्वर्ट कर दिया है तो पॉजिटिव आ जाएगी, 2.303 इंटू log 40 log 2। सो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 27.636 और इसको हम लीटर एटीएम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 12.364 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, बेरिलियम हैज लीस्ट नेगेटिव SRP वैल्यू in alkaline earth metal group. Yes, it has the least SRP value, and because it is most reactive and least SRP. Beryllium has high hydration enthalpy because it is the smaller in size, beryllium 2 plus, smaller in size, it has high hydration enthalpy and high enthalpy of atomization. ये सॉलिड स्टेट में है तो इसके एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा है, सो दोनों स्टेटमेंट्स सही है। Next, find the order of reaction X gives Y using the following data. इसमें pressures and half lives दिया है, तो इसमें pressure and half life को यूज करके T half equal to concentration, initial concentration power 1 minus 1, इसमें T half 1 by T half 2 equal to P1 by P2 power 1 minus n लिखेंगे, तो इसमें T halves 4 by 2 equal to 50 by 100 into 1 minus n। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ऑर्डर वैल्यू आएगा 2, दैट मीन्स इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट, दिस इज फ्रॉम गैसियस स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर ए गिवन एंड्रूज आइसोथर्म ऑफ CO2। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड स्टार्ट एट पॉइंट C, ये गलत है, क्यों? यहाँ A to B कर्व शोइंग गैसियस स्टेट and because it is the PV graph, this curve is showing gaseous state, and B to C, if you further decrease in volume at B it starts liquefaction, and B to C this curve is showing liquid and vapor combination, and after C it is completely converted into liquid phase. That means this area is showing the liquid phase, this area is showing the gaseous phase, and this curve इसके अंदर ये गैस प्लस वेपर फेज, आई मीन वेपर प्लस लिक्विड फेज दोनों को शो कर रहा है। अब इसमें फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड एट स्टार्ट एट पॉइंट C गिवन है, नो इट इज कंप्लीट हो जाएगी, बी पॉइंट के बाद ही लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम पॉइंट B to C अमाउंट ऑफ लिक्विड इज इंक्रीजिंग, यस अमाउंट ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट B, ये भी सही है। नेक्स्ट, एट पॉइंट B and C बोथ लिक्विड एंड वेपर कोएग्जिस्ट। सो BC कर्व, ये BC कर्व में ये बताता है इसमें लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट होगा, ये भी सही है। An ideal solution has mole fraction XA equal to 0.7 and vapor pressure is equal to 350 torr. Another ideal solution has mole fraction of solute XA equal to XB equal to 0.2 and vapor pressure equal to 410 torr. Then calculate vapor pressure of PA0. So two solution को mix कर दिया है, तो इसमें PA0 को find करना है। इसमें according to Raoult's law, XA PA0 plus XB PB0 equal to PS, इसमें 0.7 into PA0 plus 0.3 into PB0 equal to 350। अब इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं 0.2 PA0 plus 0.8 PB0 equal to 410
एंड पी ए नॉट इसको कैलकुलेशन करेंगे ये दोनों को सॉल्व करके, देन यू विल गेट पी ए नॉट इक्वल टू 314 टार। सो यहाँ आपको दो इक्वेशन मिल रहा है, फर्स्ट सॉल्यूशन एंड सेकेंड सॉल्यूशन से ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको पी ए नॉट इक्वल टू कितना मिलेगा, 314 टार आएगा। स्टूडेंट्स, that's it about this shift and we will meet again in the next shift.